Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 22 of class inter. Subject is your mathematics. So dear students, in last lecture number 21, we have studied a geometrical meaning of a differentiation. Now in this lecture, we are going to start solving the exercise 5.1. So exercise 5.1 question number 1 is here. Find the slope of tangent at the origin to the curve y x square plus 1 is equal to x. So हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5.1 का वो कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करें ओरिजिन पे कर्व जो है वो बराबर है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी होगी। और यहाँ पे एट ओरिजिन कहता है, ओरिजिन का मकसद 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे एक्स और वाई 0 होता है। इस हिसाब से जो फंक्शंस कर्व गिवन है, कर्व का मतलब कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन इज गिवन, दैट इक्वेशन इज़ y x square plus 1 is equal to x, y is equal to x upon x square plus y plus 1. So dear students, differentiation with respect to x, मैंने पहले ही कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट का मकसद डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट कर्व इक्वेशन यू हैव टू फाइंड dy by dx is equal to d upon dx x upon x square plus 1 by u upon v फार्मूला you have to find this. u upon v फार्मूला पिछले लेक्चर्स में हम हल करके आए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर. सो द लास्ट आंसर इज दिस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन. ओरिजिन का मकसद 0, हमें x की जगह पे 0 रखना पड़ेगा. तो डी वाई बाई डी एक्स एट 0, 1 माइनस 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1. सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. सो स्लोप ऑफ दैट कर्व इज 1 एंड वी हैव द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर. Another question is number 4. Question number 2 and 3 is your assignment. Question number 4 is this: find the coordinates of a point where the tangent to the curve y square is equal to 4x is parallel to yx. So हमें find of coordinates point find करनी है. यहाँ पे tangent is a curve and y square is equal to 4x is a parallel to y axis. Solution is that let p x comma y be a point on a curve at which यहाँ पे हमें curve is given, plane is here, p of x is a point of that plane. So let p of x is a point on a curve. हमें point suppose करनी है, point है curve की और tangent is drawn. यहाँ पे tangent draw करने. Equation is given y square is equal to 4x. So again by differentiation with respect to x, differentiation करेंगे. 2y dy by dx is equal to 4, dy by dx is equal to 4 square divided by 2y. तो जो जवाब आएगा dy by dx का 2 upon y आएगा. So for slope of tangent फाइंड करने के लिए हमें x और y पुट करना होगा. x और y is given to y और जो स्लोप आ गया 2 upon y आ गया. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के हिसाब से टेंजेंट इज़ अ पैरेलल x, टेंजेंट y इज़ अ पैरेलल. मतलब यहाँ पे प्लेन में अगर देखा जाए जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के. जी हाँ, बिल्कुल. लेट m टू द स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप है y एक्सिस का इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, 0 पुट करेंगे y की जगह तो इन्फिनिटी आएगा. तो इसी तरह बाय यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन m1 is equal to m2, 2 upon y is equal to 1 upon 0. So y is equal to 0. Putting y is equal to 0 in equation, given equation. So जवाब जो आएगा x का भी 0 आएगा, y का भी 0 आएगा. So the required point, जहाँ पे जो हमने point consider की थी, so this point is called 0, 0 point. So slope is called 0, 0.
स्लोप यहाँ पे जो बन गया 0,0 बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज योर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 is here. At a point moves in a fixed path according to the condition s is equal to 9 square root of t, where s is the distance of covered at a time t, acceleration is negative. So point moves fixed path, point fixed path की तरफ मूव कर रही है according to the conditions, distance is square root of t, where t is called the cover time, show its acceleration in negative. हमें acceleration negative की तरफ show करनी है. So distance is this, dear students, 9 into t square root of t is differentiation with respect to t, d is upon dt is equal to, which is equal to 9 1/2 t minus 1/2. स्पीड अगेन डिफ्रेंसिएशन, स्पीड फाइंड करनी है, एक्सलेशन क्योंकि डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration. So dear student, that's why we have to find again differentiation to find the acceleration. Minus 9/4 t minus 3/2 d square s upon dt square is equal to minus 9/t 4t/3. So this is the acceleration, hence 9t is a distance and acceleration is negative, क्योंकि acceleration minus 9 की तरफ है, उसका magnitude is negative. So this we have proved that acceleration is negative on the path. Another question is question number 7. If the pressure y and the volume x are connected by the फार्मूला y इज इक्वल टू 2/x, फाइंड द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करनी है, प्रेशर और वॉल्यूम हमें कनेक्टेड मिल रहे हैं और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर x इज इक्वल टू 1/2. सो गिवन इक्वेशन इज दैट y इज इक्वल टू 2/x एंड y इज इक्वल टू 2x इनवर्स. डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, dy/dx इज इक्वल टू 2d/dx x इनवर्स. सो 2 minus 1 into x minus 2 dy/dx is equal to minus 2/x square. So at a point x is equal to 1/2, just हम x की जगह 1/2 पुट करनी है, dy/dx वो जवाब मिल जाएगा minus 8. So the rate of change of y with respect to x will be minus 8. So dear students, I hope you understand this lecture. And your assignment of this lecture, you have to solve the remaining questions of exercise 5.1. Thank you, dear students.